Hello students, let us now try to understand some shortcut methods to find cubes and cube roots of numbers which are of 2 digits. So for example, first let us try to find a shortcut method. Let's try to understand the shortcut method to find cubes. What is a shortcut method to find cubes of 2-digit numbers? So this method is called column method. This is similar to what you have done in your squares and square roots chapter. Squares and square roots chapter में भी एक column method है, जिसमें आप 3 columns use करके you find the square of 2-digit numbers. You have a similar method which is based on the formula of a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So this, using this formula, we can create a shortcut method to find the cubes of 2-digit numbers. For example, if you want to find 29 whole cube, मान लीजिए 29 whole cube को find करना है. So मैं क्या करता हूं? So let us take a as 2, tens digit को a मान लीजिए and units digit को b मान लीजिए. So in this question a is 2 and b is 9. So now you create a column, you create a box with 4 columns. First is a cube column. Next is 3a square b column. 3a square b or a square times 3b column. A square times 3b column. Next column is b square times 3a column. Or directly 3ab square भी कर सकते हैं. Just for convenience I am writing this. Next you have b cube column. So you have 4 columns in this column method. So सारे numbers आप लिख लीजिए. So what is b cube? B is 9 here. So 9 cube is 729. Okay. And next, what is b square into 3a? B square is 81 into 3a is 6. Okay. So 6 and 6 8s are 48, 486. Next, what is a square into 3b? A square is something like 6. 3b is 27. So 27 into, a square is 4. So 8, 2, 4 2s are 8 and you have 108. And lastly a cube is 8. So अब हम ये सारे numbers को इकट्ठा करके will write 29 cube. So 29 cube में first देखिए ये last unit digit आप लिख लीजिए 9. नेक्स्ट जो भी नंबर्स बचा है उसको आप कैरी और कर लीजिए, सेकेंड कॉलम को ऐड कर लीजिए. इफ यू ऐड 72 यू गेट 8 5 1 558. सो इसका यूनिट डिजिट जो है वो नेक्स्ट नंबर होगा. एंड ये 55 जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए. सो 55 कैरी फॉरवर्ड किया तो 3 6 1 163. एंड ये 3 जो है आपका नेक्स्ट डिजिट होगा. एंड ये 16 जो है आप फिर कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए. यू गेट 24 एज द लास्ट नंबर. सो यहां आप 24 लिख लीजिए. सो 29 होल क्यूब इज 24389. नेक्स्ट यही मेथड यूज करके हम एक और क्वेश्चन करेंगे. सो इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड समथिंग लाइक 72 होल क्यूब, मान लीजिए 72 होल क्यूब निकालना है. So what is 72 whole cube? इसमें a को आप 7 ले लीजिए, b को आप 2 ले लीजिए. a is 7 and b is 2. So tens digit is taken as a, units digit is taken as b. So आप 72 whole cube निकालना है. Just draw the table with 4 columns. Okay. So first column is a cube.
Next column is 3a square b. Next column is 3ab square. Next column is b cube. So what is b cube? 8. 2 cube is equal to 8. So 3ab square. So b square is 4 into 3 is 12. 12 into 7. 12 into 7. 14, 1, 84. Next 3a square b. So 3 into b is 2. 3 2s are 6 into 49. A square is 49. So 49 into 6. 6 9s are 54. 5 is carried over. 6 4s are 24. 294. And a cube is 7 cube, which is 343. So 7 cube is equal to 343. So now you have all the numbers in the table. So now what is 72 whole cube? एक एक digit आप left side से right side से लिखना पड़ेगा. First digit 8, कुछ carry और नहीं है. So आप directly next में जा सकते हैं. So the last digit is 4. This 8 is carried over here. So 8 add कर लीजिए. You get 294 plus 8 is 302. And the last digit is 2 here. And ये 30 जो है आप carry forward कर लीजिए. 30. So 373. So 373248 is the cube of 72. So before going further, एक और question करके we'll try to go to the next topic of finding the finding the cube roots. So एक और number, कोई भी number ले सकते हैं आप. कौन से number लेंगे? So third, कौन से number लेंगे? Something like 67. So let us try to find 67 whole cube. So here A is 6, B is equal to 7. So मेरा column में, मेरा box में 4 column होगा. Okay. So A cube, 3A square B, 3AB square, B cube. So 7 cube is directly 343. So 3AB square, B square is 49. 3A is 18. So 49 into 18, 2, 7, 32, 39, 49, 2, 8, 1, 8. So 882. Next 3A square B. A square is 36 into 3B is 21. So 36, 72, 6, 5, 7. 756. And what is A cube? 6 cube is equal to 216. Clear? Now we'll go into the process of writing 67 cube. So एक एक digit right side से लिखेंगे. So the last digit is 3. इसके बाद ये 34 जो है वो carry forward हो गया. 34 add कर लीजिए. 6, 1, 9, 916. So ये last digit 6 लिख लीजिए. ये 91 और आगे forward कर लीजिए. 91, 7, 4, 1, 847. So last digit 7 लिख लीजिए. And 84 आप carry forward कर लीजिए. 0, 1, 0, 1, 3. So 300763 is the cube of 67. So this is the shortcut method to find cubes of 2-digit numbers. Okay. So next हम इसी का reverse process करेंगे. Estimation of the cube root of a number.